The second thing is the lack of exercise. इस lack of exercise की वजह से लोगों में फैट बर्निंग, एक्सरसाइज की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से लोगों के अंदर जो फैट बर्निंग है वो खासी कम है. जब फैट बर्निंग लेस होएगी तो उससे क्या होगा, लोग मोटे हो जाएंगे. स्टेप नंबर 3 या द थर्ड आइडिया फॉर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ओबेसिटी. तो हम तीसरी रीजन को डिस्कस करते हैं. द थर्ड रीजन behind the obesity is the third reason behind the obesity, हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं lack of exercise के बाद, that what we say is that unplanned eating जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा है रिच कंट्री, बिकॉज ऑफ द फास्ट ट्रैक लाइफ. उनके यहाँ बहुत अब्रप्ट ईटिंग, इससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं. और डाइजेशन प्रॉब्लम्स की वजह से, डाइजेशन इश्यूज और इनकी वजह से जो है वो फैट प्रोड्यूस होता है एंड लोग मोटे हो जाते हैं. नंबर 4 हम कहते हैं देयर इज अ वेरी लेस इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन है अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स ऑफ ओबेसिटी इन पब्लिक, जिसकी वजह से लोगों का एटीट्यूड जो है दैट इज वेरी कैजुअल एटीट्यूड के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं. यस एंड नो. आगे चले. हमने 4 रीजंस निकाले, अब 4 सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं. जो 4 सॉल्यूशंस हम कहते हैं कि हमने सोचे हैं, द फर्स्ट सोल्यूशन दैट व्हाट वी हैव थॉट, हमने जो पहला सोल्यूशन सोचा है, हमने ये सोल्यूशन सोचा. याद रखें, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में एक बच्चा जो कम बैंड ले रहा होता है नॉर्मली वो ये क्या करता है, अगर मैं सारी रीजंस को उल्टा कर दें, हम सारी रीजंस को उल्टा जरूर कर सकते हैं, मगर काइंडली इसको कंसिडर इस तरह से करें कि यू मस्ट बिल्ड अ लॉजिक. अगर आप उसको उल्टा भी कर रहे हैं, कम फास्ट फूड इस्तेमाल करें, तो एक लॉजिक बिल्ड करके करें और एग्जाम्पलिफिकेशंस को ना छोड़ें. तो हमने पहला सोल्यूशन लिखा है कि कंट्रोल करें, कंट्रोल ओवर द फास्ट फूड, कंट्रोल ओवर द फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड और कुक फूड जो है आपका, सॉरी, जो आपका फास्ट फूड है और प्रोसेस्ड फूड है, इसको कंट्रोल करें. इससे क्या होगा, इससे जो आपका कैलोरीज लेवल है वो नीचे आएगा और मोटापा कम हो जाएगा. नंबर 2, सेकेंड वे इज रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी बर्न आउट ज्यादा होएगा, बर्न आउट बढ़ जाएगा. जब बर्न आउट इंक्रीज करेगा तो फिर आपका मोटापा कम हो जाएगा. नंबर 3, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के पास जाने की जरूरत है, प्रॉपर प्रोफेशनल न्यूट्रिशन के पास जाने की जरूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ताकि आपकी प्लान डाइट हो. अब आप रिवर्स कर रहे हो लेकिन साथ एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव लॉजिक भी जनरेट कर रहे हो. नंबर 4, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर अवेयरनेस. जब गवर्नमेंट के अवेयरनेस बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो अवेयरनेस के बढ़ाने से ओवरऑल द एटीट्यूड व्हिच इज कैजुअल अमंग द पब्लिक, दैट एटीट्यूड विल ड्रॉप. तो जब एटीट्यूड जो कैजुअल है, जब वो कैजुअल एटीट्यूड ड्रॉप होगा तो दे विल टर्न टुवर्ड्स अ सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स ओबेसिटी, और फिर ओबेसिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी. हमने 4 पॉइंट्स को निकाला. हमने जो पहले एस्से का टेम्पलेट बनाया था फॉर इंट्रोडक्शन, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, रिपीट करूंगा उसको, ताकि आप लोगों का पूरा इंट्रोडक्शन भी रिपीट हो जाए और फिर आप नए सिरे से पूरे का पूरा टेम्पलेट नोट भी कर. ठीक है जी. तो हमने जब इंट्रोडक्शन बनाया था, तो हमने जो टेम्पलेट बनाया था उसको रिवाइज कर रहा हूँ. इन दीज डेज देयर इज अ sparking debate upon the topic of dot 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 dot. Clear? In numerous reasons, comma, the vital cause behind the obesity issue is the dot dot dot. पहला प्रॉब्लम यहां पे, उन्हीं 4 में से एक प्रॉब्लम यहां पे आएगा, एक रीजन यहां पे आएगा, मगर आप उसका इंपैक्ट नहीं लिखें, सिर्फ नेम करेंगे. फॉर एग्जांपल फास्ट फूड है ना, अब आप उसको नेम कर देंगे, इंपैक्ट नहीं लिखेंगे, कैलोरीज बढ़ते हैं. इंपैक्ट कहां जाएगा, सारा एक्सप्लेनेशन के अंदर, एग्जांपल्स दी एक्सप्लेनेशन के. इज इट फाइन? चलिए. ऑन द अदर हैंड,
on the other hand, comma, the dot 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 is the prime remit. Clear बच्चों? Is a prime remit. Is the prime remit. Full stop. Clear जी? In my personal perspective, सेंटेंस नंबर 4 और आपकी ओपिनियन होगी. ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. इन माई पर्सनल परस्पेक्टिव, कामा, डॉट 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 डॉट, फुल स्टॉप. I will elaborate the both perspectives in upcoming paragraphs. मैं भी टेम्पलेट बना रहा हूं, आप लोग टेम्पलेट लिखें, उसके बाद एसे का आंसर लिखें. Upcoming paragraphs of this essay, full stop. Is it clear बच्चों? तो हमने अपना इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट डिजाइन कर लिया. अब इंट्रोडक्शन के टेम्पलेट में आप देखें तो मेजॉरिटी वर्ड्स हमारे अपने हैं. क्लियर? आगे चलिए. सारी वोकैबुलरी मैं खुद करा चुका. अब मैं जा रहा हूं एक्सप्लेनेशन के टेम्पलेट पे और मैं पैरा 2 लिख रहा हूं. ऐसे का जो एक्सप्लेनेशन का पहला पैरा होगा साइड 1 को कवर करेगा. टू इनिशिएट विद दी, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं नेम साइड 1 इनकम्प्लीट. पूरी साइड 1 को लिखना है यहां पे इनकम्प्लीट, कामा, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. आगे आएगा आपका आइडिया 1 प्लस इम्पैक्ट 1 ऑफ साइड नंबर 1, क्योंकि ये है ही सेकंड पैराग्राफ साइड 1 से मैं लिख नहीं रहा. अब इतना हमें पता है ना, हम बड़े हो गए थोड़े. क्लियर नोट? इट इज आल्सो नोटिसेबल दैट, अब यहां से पहले एग्जाम्पल कोट कर ले तो बेहतर है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, कामा, डॉट 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 एंड पेस्ट एन एग्जाम्पल. मैं पहले के साथ एग्जाम्पल लिखता हूं. 2 एग्जाम्पल्स आपने एक पैराग्राफ में कोट, 4 आइडियाज और 2 एग्जाम्पल्स आपने साइड 1 की लिखनी है पैराग्राफ नंबर 2 में. आप एग्जाम्पल पॉइंट 1 के साथ भी लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल पॉइंट 2 के साथ भी लिख सकते हैं, 3 के साथ भी, 4 के साथ. You can use 1 and 4 for examples, you can use 2 and 3 for example, you can use 1 and 2 for an example, you can use 3 and 4 for examples. So आप एग्जाम्पल किसी भी आइडिया के साथ लिख सकते हैं. 4 आइडियाज हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी के साथ भी लिख सकते हैं. 2 एग्जाम्पल्स हुए तो इट विल मेक अ वेरी गुड लेंथ ऑफ योर एसे एंड अ वेरी गुड इंप्रेशन. क्या आपने उसको खासा कोई हैसियत किया. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, अब मैंने एग्जाम्पल कोड कर दिया. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसी पॉइंट के साथ लिखें, आप थर्ड के साथ भी लिख सकते हैं. क्लियर जी? आगे चलिए. इट इज ऑल्सो noticeable that idea number 2 plus impact number 2, full stop. Is it clear? It is considered that idea number 3 plus impact number 3, full stop. For an example, dot 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 dot. आप, मैंने यहां पे एग्जांपल्स 2 लिखे, एक 1 के साथ, एक 3 के साथ. You can write with 1 and 2, you can write with 1 and 3, you can write with 2 and 3, even you can write with 2 and 4, you can write with 3 and 4. That is not a problem. लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए टेम्पलेट में एग्जांपल डाल रहा हूं ताकि आप एग्जाम में भूले ना. फाइनली, comma, idea number 4 plus impact number 4 and full stop. We are done with the paragraph number 2 of essay. ठीक है जी? हमने अपना टेम्पलेट पूरा किया. 2 पैराग्राफ्स हो गए. कम ऑन पैराग्राफ नंबर 3. अब ये एक्सप्लेनेशन होगी साइड नंबर 2.
heading towards, comma, name site 2 incomplete, मुकम्मल नाम लिखें site 2 का, name site 2 incomplete, पूरा नाम, heading towards the solution of the obesity problem in the rich countries. Clear? Comma, the primary is idea number 1 of site 2 plus impact number 1 of site 2. Full stop. Is it done, my dears? आगे चलिए. Is it done? आगे चलें. Such as, जैसे के एग्जाम्पल आ गई. So dot 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 dot. Second point लिखना. Furthermore, comma, idea number 2 plus impact number 2. Full stop. Like, example आगे, comma, and dot dot dot. Moreover, third point पे जा रहे हैं. Moreover, comma, idea number 3 plus impact number 3. Full stop. Lastly, comma, idea number 4 plus impact number 4. हमारा paragraph 3 is over now. Concluding the topic, paragraph number 4, concluding the topic, comma, in my opinion, comma, this sentence will be from side number 1. Idea only, side 1, idea. एक idea, कोई एक, any one idea, any one. Full stop. However, comma, side 2, any idea, कोई एक idea जो आपके ख्याल में सबसे बड़ा idea, जो सबसे बड़ा point है, सबसे बड़ा problem है, I mean सबसे बड़ा solution है. Advantage, disadvantage, सबसे बड़ा advantage है, सबसे बड़ा disadvantage है. Is it clear or not? 2 question ऐसे है तो एक side 1 का एक point और एक side 2 का point. Is it done? So it is what the template. अब इस template में हमने जो बनाया है अपना जो essay है obesity, जिसके हमने 4 points निकाले हैं, अब उसको हम insert करने के वास्ते जा रहे हैं. यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, फिर मैं यहां से आगे चला रहा हूं. चलो अब अपने जो हमारे आइडियाज हैं उनको वी आर गोइंग टू पुट इनटू द टेम्पलेट. ओके, इन these days, comma, there is a sparking debate. मुझे 2 बार लिखना पड़ रहा है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फॉर आप अंडरस्टैंड करें, मैं 2 बार लिखने का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह. अपॉन the topic of obesity across the globe, especially in the modern countries, full stop. मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था रिच कंट्रीज, तो मैंने उसको पैराफ्रेज कर दिया और मॉडर्न कंट्रीज कर दिया. ठीक है जी. in numerous reasons, comma, the vital cause behind this issue is the excessive consumption of the fast food. On the other hand, comma, the most smart solution. अब आप कहेंगे सर ज़ीशान टेम्पलेट से बाहर निकल गए हैं. ओके फाइन. the prime solution, अच्छा बच्चा होगा तो क्या लिखेगा? remedy. The prime remedy to this problem is the persistent, लगातार exercise on the daily basis, full stop,
In my, आपकी ओपिनियन सेंटेंस 4, in my personal perspective, मेरे जाती सोच के मुताबिक, कामा, public is unaware, उसको पता ही नहीं है, to the possible, यानी कि suspected. पॉसिबल लिखेंगे तो राजा बाजार अप्रोच है, सस्पेक्टेड लिखेंगे तो जरा स्मार्ट अप्रोच है ना. तो पीपल आर अनअवेयर टू द सस्पेक्टेड dangers of high body mass full stop. In my personal perspective, public is unaware to the suspected dangers of high body mass. मोटापे के dangers के बारे में उन्हें पता ही नहीं. I will elaborate the both perspectives in upcoming paragraph of this essay. Full stop. So I'm done with my introduction. तो मैंने आपके टेम्पलेट में चीजें डाल दी. To initiate with the reasons causes हो गया, factors behind the obesity problem in the rich countries, comma, it is important, अभी तक आपका टेम्पलेट चल रहा, it is important to understand that, अब आपका पहला आइडिया आ गया, important to understand that people consume a huge amount of fast and processed food that raises, आप increases भी लिख सकते हैं अगर आपको राजा बाजार अच्छा लगता है, that raises, that enhances the calories level, leading to body mass, leading to body fat, कुछ भी लिख सकते हैं. क्लियर जी. मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, खामा, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, बर्गर्स, खामा, फ्रेंच फ्राइज and beverages are very common. Full stop. Yeah? आप beverages, हम लिखते beverages हैं और बोलते beverages. हुआ है. Second point. It is template चला रहा हूं. It is also noticeable that अब second point आ जाएगा, that there are a lot of unplanned eating. There are a lot of unplanned eating habits in these societies. आपने पॉइंट लिख लिया, अब इम्पैक्ट को बेशक बाहर लिखो, societies. अब इम्पैक्ट को बाहर लिखते. This increases the digestion problem. मैंने इंक्रीज ये लिखा कि आप बुरा ना मान जो ना कि हमारे इंक्रीज को नजदीक नहीं ला रहा, अगर ना तो क्लाइंब भी था, राइज भी था, अपराइज भी था, है ना.
This increases the digestion problem and obesity. Full stop. Clear? आगे चलिए. अब मैं एग्जाम्पल कोट नहीं कर रहा, अगले पॉइंट के साथ करूं. It is considered that public is very less interested in consistent exercise. अब एक्सरसाइज ऊपर हो गया है. Physical exertion, very less interested in physical exertion. Consistent means persistent, means regular, means continuous. ठीक है जी. So persistent, consistent, regular, continuous, 4 synonyms हैं. ऊपर मैंने यूज persistent किया, तो अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ? Consistent. Physical exertion, which is also a element behind less fat burning, fat burnout, and obesity. Full stop. 3 पॉइंट्स हो गए. अब हम इसके एग्जाम्पल कोट कर देते हैं. For an example, comma, walking, playing in the grounds, or even be swimming, or very less common. Full stop. आखिरी पॉइंट आ गया. Finally, comma, individuals, पहले लिखा पब्लिक, फिर लिखा पीपल, अब लिख रहा हूं इंडिविजुअल्स. अगर रिपीट करना पड़े तो एक वर्ड को रिपीट कीजिएगा, खाली 100 बार रिपीट कर. हर वर्ड को रिपीट ना करिएगा, वो फिर मल्टीपल वर्ड्स की रिपीटेशन से बैंड खराब हो जाएगा. इंडिविजुअल्स are not well aware to the possible adversities, बुरे impact of high body mass, which makes them casual, full stop. Such as, जैसा के, comma, है ना? Such as, जैसा के, blood pressure, है ना? Comma, sugar, and even the heart diseases are related to the same obesity. Full stop. Is it done? So we are done with all the 4 ideas and all the 4 examples, Numan Saab and Dost. हम 4 ideas और 2 examples को उनके impact के साथ complete कर चुके हैं. Yes and no? So we are moving towards paragraph number 3, and paragraph number 3 is relating to the solutions. Clear? हम अपने template के साथ ही शुरू करेंगे. Heading towards the solutions to solutions of the obesity, rising obesity in the developed countries. एक दफा वर्ड यूज किया मॉडर्न, एक बार रिच, एक बार डेवलप, तीनों सिनोनिम्स है. Developed countries, comma, the primary is
the control over the fast and processed food, full stop. अब ये हो गया आइडिया, इंपैक्ट अलग लिखता हूं, दोनों ठीक है। आप विच लीड्स टू और विच विल मेक, और मीन्स आप विच या विच लीड्स टू के साथ आप इंपैक्ट साथ भी लिख सकते हैं, और आप फुल स्टॉप के बाद दिस के साथ या सेम इज द रीजन के साथ द सेम इज द फैक्टर के साथ आप इंपैक्ट अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस कैन reduce the extra calories causing obesity, full stop, yes and no। हमने इम्पैक्ट को अलहदा लिख दिया है। अब हम एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, लाइक अब कौन कौन से आपने प्रोसेस फूड्स कम करने, लाइक KFC, कामा, मैकडोनल्ड्स, कामा, Subways, and the sugary juices. The sugary juices. Is it done? Sugary juices, full stop. So I'm done with all examples of idea number 1. ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं सेकेंड आइडिया पे। What is the second idea? Second idea is, what was that? ऊपर देख क्या था? Okay, so lack of exercise. Okay, furthermore, the continuous body workout can also be very fruitful for fat burning and its reduction in the body and here it is। ठीक है जी, अब हम इसका एग्जांपल कोट कर देते हैं। हाँ, such as Khama joining the gym, या पहले लिख दें for an example, या such as brisk walking, comma, है ना, brisk walking, comma, physical games, or even joining a gym, full stop, है ना। Moreover, enjoy किया करें चीजों, enjoy करें इसको। Joining a gym can be helpful, उसने ग्रीन किया है, can be supportive, चले can be supportive, ये तू ग्रीन न कर भाई। Moreover, third point है ना, moreover one should visit, या people should visit, individuals should visit, public should visit, a professional visit the professional nutritionist, professional nutritionist for an adequate diet plan, full stop. This will be helpful for significant calories. This will be helpful for significant calories to lean the body. बॉडी को पतला करने में जितनी कैलोरीज है बस वही मिलेंगी, है ना, to lean the body. Last one, lastly, आखिरी पॉइंट, lastly comma, सबसे एंड पे क्या, lastly, government should issue
some information papers, papers containing the dangerous sides of obesity to help recognize the importance of being healthy, full stop. This can be done on the social media, common newspapers, or even the televisions, full stop. Paragraph number 2 is over. All 4 points over. 2 के बजाय 3 examples हो गए. Concluding the topic, comma, in my opinion, the fatal cause behind the obesity in rich countries. The fatal cause behind the obesity in the rich countries. Fatal cause in the rich countries is the fast food. Clear or not? Is the fast food consumption, the fast food usage. Clear? है ना? Or, however, comma, the body workout can be a very smart solution. Full stop. And that's all. One out of can be done. So 1 out of the reasons have been mentioned in the conclusion. 1 a good solution. आपके चारों में से एक आपने लिख दिया, जब यहाँ में सबसे फैक्टर था उसको आपने लिख दिया सोल्यूशन में या प्रॉब्लम में, और सबसे जो अच्छा सोल्यूशन था उसको आपने लिख दिया सॉल्यूशंस में. So that is what all we did here in this essay, and we're going to count down the words that we have written. The words that we have count down, we are going to count down the words. आप लिख लीजिए, लिखें आराम से.